Hello, hello and welcome. Welcome to this live session. What a day. Okay, what a day. Weekly expiry, monthly expiry, quarterly expiry, yearly expiry. It's year end and yes, very important day for the financial year end और आपको आपके अकाउंटिंग के लिए ऑडिट्स के लिए important day है. So usually मैं एक सलाह देता हूँ आपको कि keep your positions, square off all your positions and keep everything clean. Don't keep any open positions. That's good for audit and all. But yes, your broker can also provide you proper reports so that they can be used for your taxation purpose. All right. And if you are very active trader, if the transaction volumes are very high, you also need an audit. Okay. Especially F&O traders. Yes, you have to see whether you need an audit. So वो सारे check कर लो. Good. So सभी का स्वागत करता हूँ. Thank you so much. Okay. और कल हमारा एक सेशन हुआ है जिसका आपको भी विच विल बी प्लेड फॉर यू गाइस. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था अबाउट प्रोफेशनल ट्रेडिंग और हमने एक सवाल किया था यूट्यूब में कि व्हाट इज प्रोफेशनल ट्रेडिंग. तो ये एक शो भी लेके आएंगे हम आपके पास. सो आज के दिन के बारे में क्या कहे. इट वाज अ टिपिकल एक्सपायरी. कल हमारी आज मेरा लाइव मेंटर सेशन था सुबह समय में लाइव मार्केट सेशन में ही था और बहुत सारे ट्रेड्स किए मैंने. आज भी ट्रेड्स किए और स्पेशली बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग साइड पे किए. और कल हमारा प्रिपरेशन था उसमें मैंने कहा था कि मोस्ट लाइकली इट्स गोइंग टू बी अ नॉन इवेंट. एक छोटा सा न्यूट्रल कैंडल रहेगा. तो इट्स टिपिकली ऑप्शन सेलर्स डे वंस अगेन. कॉल बेचो पुट बेचो वहीं पर पैसा आया. मेरा सिर्फ एक स्ट्राइक पे लॉस हुआ है एंड दैट वाज आई थिंक 17,500 पुट आई गेस. 17,500 पुट में थोड़ा सा लॉस हुआ. अदरवाइज 500 के कॉल में 550 के कॉल में 600 के कॉल में सब में पैसा आ गया. एंड यस या एंड बैंक निफ्टी में भी सेम थिंग. आई वाज कैरिंग शॉर्ट स्ट्रैंगल्स फ्रॉम यस्टरडे. 36,000 के पुट्स 36,500 के कॉल्स आई वाज कैरिंग सिंस यस्टरडे एंड ऑलमोस्ट सब कुछ जीरो हो गया. बट आई कवर्ड विद स्मॉल डेबिट. मैंने थोड़ा सा पैसा दिया और कवर कर दिया. So usually, I try to see whether I can make up about 70-80% of the move. If I get it, I book my profits instead of keeping, because option sellers के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. थोड़ा सा अगर प्रीमियम रह जाता है तो कवर कर लो. कुछ छोटे प्रीमियम के चक्कर में बड़ा लॉस भी हो सकता है, इसलिए छोटा छोटा प्रीमियम है तो कवर कर लो. ओके. सो यस, देखते क्या हुआ आज. यस, क्या हुआ आज. शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ. Oh, this is natural gas. सामने नेचुरल गैस आ गया क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है और ये देखिए मेरा क्रूड भी कल शॉर्ट था. मैंने एक लाइव सेशन भी हुआ था कल हमारा. क्रूड भी शॉर्ट था. दिस इज आई हैव शॉर्टेड नेचुरल गैस एंड आई डू हैव अ पोजीशन देयर. सो वांट टू सी नेचुरल गैस. Yeah. So this is my short position in natural gas. I'm still holding about 60 lots. So I believe natural gas may fall. और ये एक सपोर्ट था जो अभी उसने तोड़ा है. So this support is decisively gone. Okay. So मुझे लगता है कि ऐसे धीरे धीरे यहाँ तक भी आ सकता है. तो काफी नीचे आ सकता है. So let's see. All right. So इस पे तो नजर रखेंगे हम नेचुरल गैस पे. बट मुझे क्या दिखाना है. Yeah, Bank Nifty and Nifty. You really see what was Bank Nifty today? पूरा दिन का कैंडल देखो. तो क्या है? न्यूट्रल पैटर्न है. This is exactly what I was expecting. न्यूट्रल पैटर्न, ना ऊपर ना नीचे. तो ऑप्शन बायर्स की तो वाट लग गई. So option buyers did not make money today and option sellers did. All right. Nifty similar action. Neutral pattern. Okay. So it was typical option sellers day. And I was one of them. I'll just show you some of my trades that I did. To begin with, I started with 550 call ka short, which I shorted at like 36, covered at 78 paise. So और एक 500 का कॉल भी बेचा था. 34 अभी 18 में कवर हुआ है, उसमें भी प्रॉफिट्स है. लेकिन ये जो पुट था ना उसमें मुझे लॉस हुआ. 25 का मेरा एवरेज है, 35 तक गया है तो उसमें 19,000 का, ज्यादा लॉस नहीं है, 19,000 का लॉस है. Okay.
एंड बैंक निफ्टी पुट्स या 300 की पुट्स बेचे 36 में, वो दो रुपए में कवर हुआ। और 500 के कॉल्स मेरे तो कल से ही शॉर्ट थे, वो मैंने कवर कर लिए। दिस इज नॉट अ सुदामा प्ले दैट आई हैव डन, आई जस्ट कवर्ड दिस कॉल्स। सो यस, आई मीन टिपिकल सेलर्स डे था ये। जो भी कवर हुआ है मेरे कल के शॉर्ट्स जो थे वो कवर किए मैंने। सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, so typical, as I said, typical seller's day. If you see the 15-minute chart, what it did from the beginning of the day, it opened with a gap up, it went up, and then it came down again. Okay, so जब ऊपर गया तो बहुत बढ़िया मौका था 550 के 600 के कॉल्स बेचने का, जो कि मैंने किया। 500 के कॉल्स 550 के कॉल्स बेचे थे। एंड जब नीचे आया तो भी पुट्स बेचने का अच्छा मौका था। ऑलराइट, so this is how market was today, just sideways. And जिन्होंने शॉर्ट्स ट्रायंगल किए उनका फायदा हो। ठीक है, इट वाज एन एक्सपायरी डे। सो टिपिकल ऑप्शंस का गेम जैसे होता है वैसे ही हुआ। यू नो, लॉट ऑफ स्टॉक्स, अदानी पोर्ट्स में मैं लॉन्ग था, एंड अदानी पोर्ट्स आई it was a nice closing also, and 185, my goodness, oh, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर है, सॉरी, अदानी पोर्ट्स में भी ऊपर जाके फिर नीचे आया है, यू कैन सी। ओके, सो एक टिपिकल रेजिस्टेंस अभी भी ले रहा है उसी जगह पे। सो आई एग्जिटेड some of my holdings that I had. I could exit it with an average of 25, so I could exit this. So Adani Power, and I basically have cleared off everything. You know, I'm not keeping a big long positions there. You know, both सब कुछ clear कर दिया मैंने. So that this was a day where you just clear off everything. I was short on 495 call, which I covered. There was a spread. So SBI का 495 का call मैंने cover कर लिया, और 490 का call long था जिसमें मेरा loss हुआ है थोड़ा सा. So that is how it is. Okay. All right. Okay. So I'll just come back to the questions that people have, and some of the comments, not questions. You know, nowadays people are not posting too many questions, but I think there are a lot of comments. So this is a big day for me. Paid advance tax. Now, this is why am I sharing this? Is because, you know, you feel so good, and also I am one of them. You know, I've paid a lot of advance tax, and एक सोचा था कि टिपिकल एडवांस टैक्स में वही होता है कि, यू नो, लास्ट 3-4 दिन में क्या होगा, अगर प्रॉफिट आता है तो क्या करें। सो टिपिकली मैंने एक सोच लिया था, एडवांस टैक्स तो ऑलरेडी ज्यादा ही भर के रखा हूँ, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो क्या। तो मैंने टिपिकली एक आइडिया देता हूँ कि अगर लास्ट 2-3 दिन में अगर प्रॉफिट होता है तो वो पूरा डोनेट कर लो। You know, we have defense funds and PM care and, you know, all these funds where entire profit, if you give, you get 80G benefit, 100% rebate. Okay, so this is typical, and then that actually sets you free from your trading pressures, and then whatever profit comes, you are ready to book it. You know, for example, yesterday I was short on crude oil. You know, कल मैंने लाइव सेशन, मैंने एक सेशन लिया था, उसमें लाइव थे हम, तो मैंने क्रूड ऑयल शॉर्ट किया था। आज जैसे ही मार्केट खुला सीधा गैप डाउन, 4% डाउन, मैंने बुक कर लिया। You know, I immediately booked that profit, and that's, yeah, crude oil. I covered at like 7748. Okay, it's showing a 6 lakh ka loss now. This is loss in profit, not profit. This is not a loss, but this is loss in profit. Why? Because I covered the position. My crude oil, I'll just show you. See, net position is 0, and profit booked is about 26 bricks. Okay, so this is how, you know, you can be little cautious and just book the profits. You know, this is a profit booking day, 31st March, कर लो, बाद में अभी कल से नया साल शुरू होगा तो देखेंगे क्या होता है। ठीक है, बट जरा चार्ट को भी देख लेते क्रूड ऑयल के। वो very nice. Yeah, so if this trend line goes, it will be fun. Okay, I believe it may go all the way here, 6631. यहां तक भी जा सकता है, अभी भी एक पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स सी। अरे वाह, आई डोंट वांट टू टेक एनी पोजीशन टुडे, जो भी था मैंने कवर कर लिया। अभी आई जस्ट वेट एंड वॉच, देखता हूं क्या होता है।
But if I had not covered, it would have been additional 7 lakh profit. But I'm happy with what I've made. Pretty happy. Very, very happy. Okay. क्योंकि 70 lots I was short, right? So 100 पॉइंट भी नीचे आएगा और वहां से जहां पे मैंने कवर किया है तो भी 7 लाख रुपया होता है. Okay. So yeah. Okay. So obviously a big day for me. I paid advance tax for this much more than the loss I used to incur in a financial year in F&O before joining ASTA. So Ravinder Sharma, hearty congratulations. He has paid more tax than the loss he used to incur. 16th consecutive positive month of 5% return on capital employed for trading business. Love you, my ASTA family tree. I will remain with ASTA forever. Ravinder Sharma, Amritsar, 3G03. He is a student of 3G03. अभी हमारा 3G09 चालू होने वाला है. तो करीब 6 ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले से हमारा स्टूडेंट है. अभी भी जुड़ा हुआ है, आस्था सत्संग सेंटर में है. And Ravinder Sharma, I think I met you this time when I was in Delhi. So yes, congratulations, hearty congratulations, and I hope many more people like this. You pay taxes. This is why this is a genuine profession. Every penny is accounted for, and you should be. मैं कहता हूँ गर्व से कहो हम ट्रेडर है, क्योंकि yes, if you are making profits, you are proudly paying those taxes. Okay, hearty congratulations, Ravinder. Sir, I pursued my 12th. I wanted to take admission. So, sir, is there going to be offline programs ahead? Don't worry if you have pursued my 12th. I wanted to take admission. Now, Atharva, join the program which is just starting. We are starting. We are starting from 4th of April in Mumbai. And I'll be the main trainer for that. So, agar tumhara 12th, jo bhi vacation hai, this is the best time you can invest in yourself. Okay, so invest in yourself and develop skill. All right. There is no offline sessions now. So there are no offline programs in Geo. Everything is going to be online, but there could be some offline live sessions after you complete your programs. All right. So don't worry. A lot of people travel, come from various places. So the online model is absolutely working like a magic. It's like one-on-one teaching for everyone. And you save a lot of time in travel and everything. Okay. So trust us. Ghar Ghar Gurukul is a rock solid training program. So don't worry about offline. Just join the online batch. All right. But if you're below 18 years, you need your parents' permission. Okay. So without that permission, we don't give you admission. Okay. Yeah. Sir, I'm 3G07 student. Stop loss बिना ट्रेड करने लगा था तो लॉस हुआ, फिर मैंने ट्रेड करना बंद कर दिया और अभी बस प्रैक्टिस और स्टडी वर्क्स वंडर्स. देखो अभी उदित, ऐसा मत करो भाई. जस्ट प्रैक्टिस ऐसे प्रैक्टिस पेपर पे करके कुछ नहीं होता. तुमको एक्चुअल ट्रेडिंग करना पड़ेगा. ऑलराइट. एंड जो भी स्टडी कर रहे हो थोड़ा सा एक्सपोजर लो. और क्या प्रॉब्लम है स्टॉप लॉस है, ले लो यार. क्या डर है, वो तुम्हारा दोस्त है. ओके, सो दोस्त से क्या डरना, तुम्हारा मित्र है कि भगवान है तुम्हारा, उससे क्या डरना. स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केट्स. सो लेना चालू करो. हाँ, ये हो सकता है कि अरे स्टॉप लॉस लेने के बाद मेरा फिर वो चलता है, वो सारे साइकिल से गुजरोगे. ओके, यू विल गो थ्रू ऑल द साइकिल्स ऑफ whether my stop loss is correct or not. But you start taking stop losses, because instead of making big losses and small profits, it's better to take small losses and big profits. Okay, so start actual trading. ये ऐसा पेपर पे प्रैक्टिस करके कुछ नहीं होगा. या स्टडी वर्क्स, बट स्टडी वर्क्स यार, we know study works, but now unless you practice it and unless you implement it properly, it's not of any use. As you said, our books are more than enough. We read these books number of times. We do the revision in groups, and now ASC centers. I didn't read any other book. Don't watch any other YouTube videos apart from yours, and I'm doing good. This is a good point. Now let me tell you, don't have to go for sir वो book है क्या, वो है क्या. तुमको कोई YouTube देख रहे हो तो सडनली कोई एक पॉपअप आ जाएगा, देखो मैंने इतना प्रॉफिट किया, मैं बताता हूँ एक स्ट्रैटेजी है. वो और स्ट्रैटेजी 10 स्ट्रैटेजी दिखाएंगे तुमको लोग, उसके स्ट्रैटेजी के चक्कर में पड़ोगे, कुछ नहीं होने वाला. There are so many strategies out there in the YouTube, but are there as many success stories? No. There are hundreds, thousands of books, but are there as many success stories? No. So मैंने ये सब किया हुआ है, और मैंने जो बनाया है, हमारे जो बुक्स है, that are मस्त चलते भाई, एकदम टकाटक चकाचक पकापक. Okay, so
Just read our books. If you're our student, just read the books. You don't have to go and watch some other books. Keep it simple. Complicate करना है situation को, life को तो कर सकते हो, तुम्हारा choice है. But keep it simple. Simplicity will give you success. All right. So you're right, dear Prashant. Just follow our books. You don't have to read any other book. When will offline eye opener in Mumbai? Thanks. That's a good question. I would love to have one. And since you are saying so, we may try to do so. Okay. I don't know. Maybe 3 months down the line, 4 months down the line, I may try. Okay. Hello, sir. I'm 3G5 student. My phone level complete. Only 4th level missed out. Can I join only GUI level next batch? Absolutely, you can, dear Raj. You can. If you have done 3 levels, completed 3 levels, you can take admission in the 4th level also anytime in any batch. So 3G09 shuru ho raha hai. You can either repeat your first 3. That is another thing I would recommend strongly. You repeat SMM Papa form. तुम्हारा understanding level 10 times बढ़ेगा. Generally, repetition is the mother of all skills. It's better to invest in yourself. But still, if you don't want to, you can repeat. You can join GUI programming 3G09 batch, which I'll be conducting. Okay. Yeah, this is the poll that we have run. Can trading be a full-time profession? Yes, no. A lot of people are saying yes, and I'm sure they are all ASTA students. No and not sure wale definitely हमारे students नहीं हो सकते mostly. Okay. Raj, thank you for raising this question, dear sir. Now this is a very interesting message, guys, and I'll tell you, this is a very important message. Do read it carefully. I'm a student studying chartered accountancy. I'm very passionate about markets and all. I've been trading here since 2 years. Have I done exceptional? No. Just surviving here somehow, thanks to those 3-4 IPOs that I had given me 100% returns. So he has survived because of his luck. He got some IPOs and those gave him 100% returns, and that is taking care of his losses, I guess. Okay, so he's just doing naram garam. Okay, so understand the person. Some IPOs, he got some IPOs and he got some profits, and that is taking care of the losses that he must have done in other investments and trading. This makes me feel, can I wholly depend on this? Because market is moved by operators. Now, this is a big problem with people. This is not so. Okay. And even if it is driven, you can know where the operators are doing. It's not that everything is in their control. And there are so many FIIs and so many prayers, DIIs, FIIs. So operators are not there to move the markets. They have certain instructions. So you can understand the game of operators if you study this game. Okay, जैसे हम करते हैं, हमको पता चलता है ऑपरेटर क्या कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यही एक लेते हैं, हीरो मोटोकॉर्प. डेली चार्ट दे दो. ये जो सेलिंग आया ना, इसके बाद तो हम लॉन्ग ही कर रहे हैं भाई. ये जो सेलिंग है. So this is typical. There was some bad news and then some fall, but इसके बाद हम तो बाई करते हैं because हमारा study वैसे कहता है. All right. So don't worry about operators. If you don't know study, you are going to get caught in operators game. But ऐसा कुछ नहीं है. Operators manage everything. So how can I make money? We are making money, and we don't care what operators do because we know what they are doing and how to actually maneuver yourself with the operators game. ओके, सो ऑपरेटर का गेम समझ में आता है, चार्ट्स देख के समझ में आता है. डोंट वरी. और वो लेवल पे आ जाओगे तुम जब कोर्स कंप्लीट करोगे. ओके, तो एलियट कंसेप्ट्स है, एवरीथिंग इज देयर. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं तुमको अभी ना ताजा ट्रेड दिखाता हूं मेरा आज का. बजाज फाइनेंस, आई वाज लॉन्ग. ओके, अब तुम बोलोगे सर ये ऑपरेटर का है क्या? हाँ, ऑपरेटर ने किया रहेगा. क्या किया रहेगा? गेम दिखाता हूं. ये देखो, ये ऑपरेटर का गेम है आज का. सीधा एक कैंडल जप करके ऊपर लेके गया. ये सुबह 9:30 बजे की कैंडल है, 15 मिनट पे आज की कैंडल है. और ये कैंडल है 9:45 की. यहाँ पे मैंने बेचा. क्यों बेचा? अरे 5 वेव स्ट्रक्चर खत्म. ये देखो 1 2 3 4 5. ओके, एंड of course there are certain price action concepts which will be learning in Papa seminar when we do a Papa seminar of ASTA. तो मैंने क्या किया, मैं अभी तुम्हारे को लाइव ट्रेड्स दिखाता हूँ, मेरे एक्चुअल ट्रेड्स दिखाता हूँ. यार क्रूड ऑयल लॉन्ग करना चाहिए लगता है. जस्ट अ मिनट ना. क्रूड ऑयल
I'm going to go long on this with some stop loss here. 661. I'm going to buy it. 3661. देखते हैं आया तो ठीक है. ओके, सो मैं तुमको ये इसका ट्रेड दिखा रहा था बजाज फाइनेंस. सो ये जो है ना, ये कैंडल तुमको, ये पॉइंट में तुमको प्रूव करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है. ओके, HNS, FIS, I am small player in the market without having any connection insider news. So can I survive here? You can survive. You will not survive if you don't have knowledge and skill. Okay, but you can survive if you are ASTA student. इतना मैं बोलता हूँ. और आस्था में ग्रूम हो जाओ, हमारे एससी में ग्रूम हो जाओ, तो you can survive, and not only survive, you will make profits. Okay, you will definitely not survive. 90%, 95% people lose money, right? Okay, so why? Because they fall prey to all these games. We don't. I'm just giving you a live example of what I did today. All right. So actually, recently I had met with a fund manager. He told me that they don't follow any technical analysis fundamentals. Okay, it's all about the money, bhai. जितना पैसा डालोगे उतना प्राइस बढ़ेगा. अरे भाई, ऐसा नहीं होता है भाई. ओके, देयर आर मेनी फंड मैनेजर्स. अभी मैं तुमको क्या बताऊं, अगर तुम्हारा फंड मैनेजर ये टेक्निकल एनालिसिस फॉलो नहीं कर रहा है, फंडामेंटल कर नहीं रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फंड मैनेजर ही इज. बट आई नो मैनेजर्स who follow both technical and fundamentals. Okay, there are wealth managers, and some of my students are managing wealth of about 1,000, 2,000 crores. Okay, so I know what they do, and they are my students, and they do much better than, generally they beat the peers. So there is no way, if you follow technicals and if you back it by fundamentals, and if you follow certain fundamentals and back it by technicals, you have a lethal combination. Okay, so अगर तुमको कोई ऐसा फंड मैनेजर मिला है जो बोलता है हम कैसा नहीं करते, पैसा डालो ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं रहता है भाई. देयर आर सो मेनी प्लेयर्स आउट देयर. अब मैं तुमको क्या बताऊं, टाटा स्टील का एक एग्जांपल मुझे याद है, ऐसे ही फंड मैनेजर्स बोले थे. और एक मेरा ऐसे ही स्टूडेंट आया था, ऐसे कोई तो कंपनी के फंड मैनेजर था, मेरे कोर्स में आया था, बोलते आप ऐसे क्या करते हो, ये जिंदाल स्टील वाज अ शॉर्ट एट दैट टाइम, बट दिस इज नॉट व्हाट वी डू. वो नीचे आएगा तो हम और बाय करेंगे, नीचे आएगा तो और हम बाय करेंगे. तो यस, दैट इज हाउ देयर गेम इज, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ मनी. इट्स नॉट देयर मनी, राइट? इट्स योर मनी. ओके, इट्स योर मनी. सो दे विल डू बाय एवरेजिंग. नीचे आ रहा है तो और बाय करेंगे, और बाय करेंगे. इवेंचुअली अगर कंपनी अच्छी चली, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट करेंगे. अब मुझे बताओ, देयर आर सो मेनी फंड मैनेजर्स हु हैव बॉट यस बैंक. आर दे इन प्रॉफिट्स? नो. इट्स योर मनी. It's your money which they have bought into Yes Bank and DHFL and what PC Jewelers of the world. So वो तो नीचे ही आ रहा है, आर पावर है. अगर कितने फंड मैनेजर्स ने आर पावर बाय किया होगा जब वो नीचे नीचे आ रहा था. तो अगर नीचे नीचे आता है और बाय करते, इसका मतलब क्या पैसा डालते रहो तो ऊपर जाएगा? ऐसा नहीं है भाई. तो जितने फंड मैनेजर्स ने आर पावर जैसे स्टॉक्स लिए हैं या आरकॉम जैसे स्टॉक्स लिए, वो तो लॉस नहीं है ना. ओके, सो ऐसा नहीं होता. यू हैव टू लर्न प्रॉपरली. ऑलराइट, सो फुल टाइम और जस्ट पार्ट टाइम. अब ये दूसरा भाग है. मैं बताता हूं मैंने क्या किया. दिस इज अ चार्ट. Okay, and when the chart was here, I'm just going to replay it. Just going to show you when the chart was here. This was 10 o'clock, and I'll show you what I did. I was long on Bajaj Finance. 31st March. I sold this lot at 2405. Okay, and if you want to see the timing, 10:02. Okay, and this is actual trade that I have done. I was long. I exited my long position at 2405. Okay, entire 10 lots. So did I book profits? Yes, I did book profits. Had I not sold, I would be losing a profit of about 1.78 lakhs. This is the MTM on the intraday. This is not a profit. Yeah, the real profit, Bajaj Finance. I'll show you. Bajaj Finance futures. Yeah, so I made a profit of about 1.89 lakhs in that. All right. So, but not only that, what I did, I tried selling a call option at 7,400 March. मैं दिखाता हूँ, order दिखा. But that order got rejected. Why? Because this is current series. Brokers don't allow you to sell an option on the same day. And this is a problem nowadays, for people like me. So if you want to sell a call option of a stock for the current series on the expiry date, brokers don't allow it.
अनलेस यू कॉल योर ब्रोकर एंड से नो वो लॉक निकाल दो, मुझे बेचना है। तो मैंने क्या किया मैं बता, मुझे वो ये कॉल में बेचने जा रहा था 3400 7400 का कॉल एट 30 रुपीज, वो चल रहा था उस समय 30 रुपीज में। अब मैं तुमको बताता हूँ ये कॉल का क्या हुआ। ये क्या है, अपना यूट्यूब लाइव चल रहा है क्या? बजाज फाइनेंस 1400, बजाज 7,000. Oops. अरे यार, सी बजाज मार्च, राइट, दिस इज मार्च, राइट, बजाज फाइनेंस 7400 सी। ये दो क्यों दिखा रहा है? ठीक है, देखते हैं। ये देखो, एट 10 o'clock, एट 10 o'clock 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ आपको। दिस इज 10 o'clock एंड इट वॉज एट दिस लेवल। ये 10 बजे 36 30 का लेवल चल रहा था। आई ट्राइड टू सेल इट, इफ आई हैड गॉट इट I would have earned these 30 points easily, because it became zero. It became zero. Why? Because 7400 के ऊपर बाद में गया ही नहीं। So ये कॉल जो 7400 के स्टॉक जो 7400 क्रॉस किया था, this was used to sell this call options. Okay, but then did I leave the trade? No. What I did, I sold next series, because next series बेचने से तो मुझे कोई रोकेगा नहीं ना। So I sold 7,400 in the next series, 7,500 in the next series. ये बेचा, ये देखो, तेजी असोवा मंदी, ये थे संधि संधि। यहाँ पे हमेशा अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है यार। दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। So 10 o'clock, 4, 5, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11. I was just selling it because I knew, अरे ये तो अभी पैसा मस्त है। 251, 252, 261, I just started selling it. So ये था कौन सा, नेक्स्ट सीरीज का। This instead of March, if I put April 2500, see, ये मैंने बेचा 10 बजे। So this is where I was selling, 10 बजे और 10 बजकर 10 मिनट के, समवेयर हियर, एंड वो यहां पर आ गया 204 में। सो आई मेड प्रॉफिट्स। ओके, सो इट केम डाउन एंड आई कुड मेक प्रॉफिट्स। ओके, सो मैंने ये बाय कर लिया। अभी आज पूरा का पूरा बाय क्यों किया? क्योंकि 31 मार्च है यार। आई डिडंट वांट टू कैरी एनी ओपन पोजीशन, सो इट वाज लाइक अ डे ट्रेड, एंड दिस इज excellent example of day trading using option selling. Okay, so you can do option selling and you can still do day trading. यानी मैंने डे ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलिंग किया है, तो मेरे 257 का मेरा एवरेज सेलिंग है और 213 का एवरेज बाइंग है। बाय एवरेज ट्रेडेड प्राइस 213, एंड आई बुक्ड अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 4.3 lakhs. Okay, so that's an opportunity, that was an opportunity for me. All right, कमोडिटी पे ध्यान देते हैं भाई। अरे देखा गया ना ऊपर, अरे भाई हुआ, क्या बात है। भाई हुआ क्या? भाई हुआ रे 1756 में 5:56 में 20 लॉट आ गए। देखो, हम बोल रहा था ना मैं यहाँ पे कि क्रूड अभी बाय करना चाहिए। so, देखो, ये देखो, इस कैंडल में मेरी ऑर्डर आई होगी, क्या बढ़िया एंट्री मिली। 7, इस कैंडल का लो देखो किधर है, ये कैंडल का लो कितना है, 7661। देखा गाइस, and this is live trading for you during YouTube live. What is the low of this candle? 7661. What is my entry? 7661, 20 lots. Okay, फोटो छपा, फोटो फोटो छपा है, फोटो। या क्या करे कि ना करे, या कैसी मुश्किल है। So this improves my profit for crude oil today. या 27 हो गया।
तो जितना प्रॉफिट आएगा अच्छा है, क्योंकि बाद में तो देना ही है। तो मैं ये निकल जाऊंगा 98, चलो 10 लाख तो रखता हूँ। ठीक है, देखते हैं बाबू। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग। अब लोग बोलेंगे सर ये आपने उधर ही क्यों ऑर्डर रखा? पता चल जाएगा आपको, सीखो पता चल जाएगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब है भैया राज, it is it's not about all this. I think you have a lot of misconceptions about markets and about study. No, so please clear my doubts. I hope I have cleared your doubts. Eagerly waiting for doubts to be cleared. Thanks in advance. Please, in my 24 years of age, personally, I have never seen any person who is full time and earning well. I'll tell you, तुम आस्था में आओ, तुमको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, और some of them are right now with me and who are my trainers. So, मंदार रेगे, guys, if you can just start your videos. So अगर तुमको और लोग देखने हैं जो फुल टाइमर्स है और पैसा कमा रहे हैं मार्केट से, these are the guys, my trainers who are there, and there are so many students of ASTA who are making profits and they are full-time professionals now. Okay, so Mandar and all, if you can start your videos, guys. Atul, he is a full-time professional and he is making money, and I'm sure he has paid good amount of tax this year. And Mandar, तुम्हारा आज का स्कोर क्या है रे? आज around 40K. 40K. Yeah. And sir, I was so happy you showed Hero Honda, क्योंकि मैंने भी वही ट्रेड लिया था। और हमारी बात भी नहीं हुई थी about Hero Honda anywhere. I do not watch the. हम वही सोचते हैं ना, सेम सोचते हैं। बस वही सोचते हैं। कल मैंने स्टूडेंट्स को वो ट्रेड भी बताया था, and why you can go long and why you can sell puts. कल हमारा फोम का कंसेप्ट था, तो उसमें उनको बताया था कि why you can sell puts, and I told them कि मैंने पुट बेचे थे। तो कल मैंने 10 लॉट बेचे थे, 5 कल ही कवर किए, 5 आज कवर किए। थैंक यू वेरी मच मार्केट गॉड। और दूसरा था हिंडाल्को भी नो ब्रेनर ट्रेड था, उसमें शॉर्ट किया था। नहीं पुट खरीदा था। पुट खरीदा तो, आज हिंडाल्को मस्त गिरा। हाँ मस्त गिरा, तो वो 2 अच्छे ट्रेड थे। और मारुति एक था, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट था, तो मैंने स्टॉप लॉस ले लिया। कितना लॉस हुआ मारुति में? मारुति में अराउंड 8,000 का लॉस हुआ, और बाकी दोनों में 26 और 22 का प्रॉफिट है। कल थोड़ा प्रॉफिट उसमें भी बुक किया था, तो वो इसमें ऐड नहीं है। तो ओके, सो गाइस देखा, मंदर रह गए 3 ट्रेड्स, एक में लॉस हुआ है 8,000 का, बाकी दोनों में 22,000 26,000 का प्रॉफिट है, विच इज लिटिल लाइक 3 टाइम्स ऑफ द लॉस दैट ही हैज बुक। दिस इज प्रोफेशनल ट्रेडिंग। ओके, सो बी अ प्रोफेशनल। आई मीन ऐसा कुछ नहीं है ऑपरेटर मुझसे ये करवाएगा वायरल, ऐसा कुछ नहीं रहता है भाई। यस अतुल, what do you want to share with these people? Full-time trader is definitely where money works for you. तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आस्था में, जैसे सर ने कहा कि फुल टाइम ट्रेडर्स हैं, और बहुत बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जॉब छोड़ने की तैयारी में, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, और ये पाथ जो है कि ट्रेडिंग इज अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, जो अवधूत सर हमेशा कहते हैं, ये दिस इज अ वंडरफुल प्रोफेशन जहां पर you enjoy while earning, and there is no competition in this profession. एक important चीज है कि age does not matter, and your intelligence in the existing profession will also not matter. So definitely this is a game for everybody. हम तो यही कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए इसमें, ताकि we have a different scenario in India. Right. And seriously, lot of, and full-time trading, I'm soon going to talk about it. It's not about, being in front of the screen and sitting in front of market full-time. There are many full-time professionals of markets who are doctors, engineers, IT professionals, architects, all these people. They are our students, right from surgeons and the people who are owning hospitals. They are doctors owning hospitals, and they are doing those great service. But at the same time, they are professional traders. Okay, you are using market as another source of income, so that they don't have to depend on only that profession, and they are doing it to follow their passion. So you can follow whatever passion you may have, whether it's just photography or travel or cooking or anything, and use trading profession as a source of as a profession to earn some
serious money. Okay, so be a professional, and being a professional doesn't mean you have to be a full-time guy who's sitting in front of machine and screen all the time. That's not full-time trading at all. Okay, so thank you guys. Yes. Yeah. Thank you. Yeah. All Thank right. you, sir. Yes. So I hope this addresses many questions, and with live example of Bajaj Finance, I've showed how it can be done. Okay. So अब मुझे बताओ, जो मैंने ये किया था, क्रूड ऑयल जो बाय किया था, वो क्या कोई ऑपरेटर मुझे ये कर रहा है? तुम्हारे सामने सामने ट्रेड कर रहा हूं मैं, या तो जब मैंने 7661 में जो बाय ऑर्डर रखी थी, तुम्हारे सामने ही तो रखी थी, और वो आ भी गई। ये क्या हो गया? अच्छा, ये कैंसल्ड ऑर्डर। या 7661। ऑलराइट, मेरा एक सेल हुआ इधर नेचुरल गैस 2290 में, 2270 में सेल हुआ है। क्या चल रहा है नेचुरल गैस में? सडनली बाउंस, एंड दिस इज व्हाट मार्केट इज। हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद धीरे धीरे नीचे। ओके, व्हाई? दिस इज अ पावर ऑफ फिफ्थ वेव गाइस, and this is a understanding of Elliott waves. So how to use these fundas and all, you have to really learn from experts. Okay, you just can't read books and try to learn yourself. There are people who have done my Elliott seminar and said, sir हमने इतने सारे बुक पढ़े, हमें कभी नहीं पता चला, लेकिन आपके सेमिनार के बाद इतना सिंप्लिसिटी आपने किया है इसके बारे में। So we make things very simple for you. All right, so अगर तुमको आस्था के बारे में और ओवरऑल समझना है, तो what you can do, you can come to our eye opener seminar. Now there are eye openers right in this weekend, and one of the trainers, obviously आप अभी आप मिले हो हमारे trainers के साथ, अतुल and बंदार, they are going to conduct these training sessions. Like for example 2 तारीख को online eye opener होगा, 2 तारीख को, that is Saturday, by ASTA trainers, and that will be in English. Okay, and मैं खुद अहमदाबाद ट्रैवल करके अहमदाबाद में ऑफलाइन आई ओपनर लेने वाला हूं, वो भी हिंदी में। ओके, 3 तारीख को। सो यू कैन ट्रैवल इफ यू रियली वांट टू अटेंड एंड मीट मी देयर, यू कैन ट्रैवल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड कम टू अहमदाबाद एंड अटेंड, बिकॉज मेनी पीपल डू कम। जैसे मैं लास्ट टाइम भुवनेश्वर और कोलकाता में था, तो बहुत जगह से लोग आए थे एक्चुअल ट्रैवल करके टू अटेंड दैट आई ओपन। सो दैट्स अ ऑफलाइन फ्लेवर अगर तुमको लेना है तो। लेकिन अगर तुमको घर से ही बैठ के करना है, हाँ, ये मॉर्निंग में है, ये सुबह 9 बजे, नॉट इन द इवनिंग, सुबह 9 बजे। एंड उसी दिन शाम को 6 बजे ऑनलाइन आई ओपनर होगा बाय आवर आस्था ट्रेनर्स, एंड दैट विल बी इन हिंदी। तो यू हैव 3 चॉइसेस, इधर इन इंग्लिश ऑनलाइन, हिंदी ऑनलाइन, या हिंदी ऑफलाइन इन अहमदाबाद। ओके, सो दीज आर योर चॉइसेस. डू अटेंड आवर आई ओपनर्स, and I'm sure you are going to enjoy it. You're going to enjoy it. Then upcoming videos. Yeah, this is how can you make a trading as a profession. So this video also will be, you will get to know. और ये वीडियो भी आपके पास आने वाला है very soon. I think कल ही शायद आ जाएगा आपके पास. और this is my अहमदाबाद आई ओपनर का at Hyatt Ahmedabad. And obviously what you are going to learn certain basics, understanding why markets rise or fall, उसके पीछे क्या है, वो ड्राइविंग फोर्सेस कौन है, कैसे आइडेंटिफाई करें विनिंग और लूजिंग स्टॉक्स को, ओके, हाउ नॉट टू गेट ट्रैप्ड इन लूजिंग स्टॉक्स, रूट कॉजेस क्या है फेल्यूर के, हाउ टू बेनिफिट फ्रॉम फॉलिंग मार्केट्स, एंड हाउ टू मेक बिग फ्रॉम स्मॉल कैपिटल. It's not that we don't say double your capital and all, but you can certainly start small with maybe 10% of your actual capital and try to make 5 to 10% ROI. जैसे रविंदर शर्मा ने कहा कि last 16 consecutive months he is making 5% minimum. Just imagine, and that's good enough. 5% a month is good enough. People just fall for they don't want to do a serious, they don't take it as a serious profession. उनको ना 1 लाख से शुरू करना है, उनको 1 लाख का 10 लाख करना है. That's the problem. But तुम 5% a month आराम से कर सकते हो, और वो अगर करना चालू करो तो बाद में capital will never be a problem. Okay, because you would have developed a skill which can earn 5%. 5% कौन देता है? बैंक देता है, 1 साल में भी नहीं देता. Okay, तो पर मंथ अगर 5% कमाने की एक स्किल डेवलप करोगे, एंड देन ये 5% के बाद तुम 5, 10, फिर 5% ऑफ वीक भी होता है. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स 5% ऑफ वीक भी करते हैं. Okay, yeah. Once again, सेकेंड एंड ऑनलाइन आई ओपनर जो है
वो हमारे ट्रेनर्स लेने वाले हैं स्टॉक मार्केट आई प्लस, सेकेंड सैटरडे इन इंग्लिश एंड संडे इन हिंदी। ओके, और मेरा जियो पैनोरामिक का ऑफलाइन लाइव मार्केट सेशन है 4 अप्रैल को इन अहमदाबाद, बट दिस इज नॉट फॉर यू, नॉट फॉर पब्लिक, दिस इज फॉर ओनली पैनोरामिक स्टूडेंट्स, नॉट फॉर एनी आस्था स्टूडेंट, बट दोज हु हैव अटेंडेड माय जियो पैनोरामिक सेशन उनके लिए है। So recently, this is a picture from our Mumbai session. I did sessions, live sessions at Mumbai, then Pune, then Kolkata, then Bhubaneswar, then Hyderabad, then Bangalore, then Delhi. You know, everywhere I've done live market sessions. Okay, where so many students. And guys, if you attended one of these sessions, do post with your name and which branch you attended, which location did you attend. क्योंकि मुंबई में मेरे 2 sessions हुए because the crowd was so big. We had to actually book the hall twice. So almost nearly 950 students attended. It's nearly that, you know, with all the protocols and everything. We followed all the protocols and all other locations. So please, if you attended one of our sessions, guys, please post your name with your branch, location, and how did you feel? क्या मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं? Yeah. So do share your feelings there. Okay. All right. Okay. Crude oil is still going up. All right. So let me share my screen again. Okay. Yeah. Crude oil 77.55. So crude oil long क्यों लगा था? Oh, there is nice breakout in the making. All right, so I'm not going to sell this here. I'm just deleting my sale order. Okay, and ये आज का हाई है ना, मुझे लगता है क्रॉस कर ले 7968 है ना, तो मैं 10 लॉट बेचूंगा 7998। देखते 7998 पे बेचूंगा। Let's see whether we can achieve that. Okay. All right. या ठीक है, आई थिंक जाएगा 7900 तक, 900 के ऊपर जाएगा ऐसा लगता है। फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी। ओके, ऑलराइट। सो और क्या मार्केट व्यूज विद टुडेस ट्रेड? या एज यूजुअल वी विल मीट ऑन 7th of April. So that's it. You know, 7th April को हमारा next year, next financial year, the first session on Thursday, as usual. I'll be there once again. Okay. So lot of things for you coming on the plateau. अब मैं जनरली मेरा व्यू बताता हूँ क्या लगता है मुझे। मैंने कुछ मेजर पोजिशंस कैरी नहीं किए हैं, मैं सिर्फ अभी तुमको डॉलर का, लेट्स स्टार्ट विद द डॉलर। मैंने डॉलर लॉन्ग किया है आज, दिखाता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। I've gone long in dollar। और मेरा लेकिन थोड़ा सा लॉस है इधर, 3.5 लाख का, 3,35,000 का लॉस है, बिकॉज क्लोजिंग में वो थोड़ा इधर ही था, 93 में था। बट जस्ट देख रहा हूँ अभी डॉलर अभी अपना मार्केट बंद होने के बाद अच्छा खासा ऊपर आया है, तो मुझे लगता है कि डॉलर इज लाइकली टू गो अप। ओके, सो एंड दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। आई थिंक, यू नो, अपना मार्केट बंद होने के बाद ये मूवमेंट आई है। देखो 6 बजे ये वापस मूवमेंट आई है, ये 5:30 बजे की मूवमेंट थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर में गो अप टुमारो। आई एम लॉन्ग एंड ये जो भी लॉस है मुझे लगता है ये कवर हो जाएगा। 3.35 लाख का लॉस है, बट दिस इज वन पोजिशन आई एम कैरिंग। आई एम कैरिंग अबाउट 5,000 लॉट्स इन डॉलर and I'm just holding this position. Okay, I did not cover because I want to carry this. और लगता है कि ये शायद ऊपर जाएगा। हो जा रहा है, देखो डॉलर तो जा रहा है। हमारा मार्केट अभी बंद है, अदरवाइज आई वुड हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। ओके, 75.54 हो गया है। सो दिस इज फ्यूचर्स में ऑब्वियसली इसके इट मस्ट बी मच अबव दैट। जो मैंने बाय किया तो उसके ऊपर ही रहेगा, माय बाइंग वाज लाइक हियर एंड हियर एंड। ओके, सो ये स्पॉट का चार्ट है। फ्यूचर्स में काफी प्रीमियम है, 30-40 पैसे का प्रीमियम है।
So I think this should become like 76.10 now, okay, as per this price. Okay, so that's about dollar. I believe dollar is likely to bottom here and just give another bounce, ऐसा लगता है. बाकी क्या, डाउ जोन्स को अगर हम देखें, अमेरिकन मार्केट्स, it is just holding this gap. Yesterday मस्त ब्रेकआउट करके होल्ड कर रहा है अभी फिलहाल, एंड आई वोंट बी सरप्राइज इफ दे रियली पुश इट हार्डर, थोड़ा और भी ऊपर जाने के चांसेस है. ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट्स साइडवेज नेचर का लगता है, निफ्टी बैंक निफ्टी भी. सो निफ्टी आई एम गोइंग टू कीप अ न्यूट्रल व्यू, ओके, अ साइडवेज व्यू विद अ लिटिल बिट ऑफ बुलिश बायस. आज भी उसने अच्छा होल्ड किया है ये. So let's see what happens tomorrow. I'm not building any major views here. One of the targets that I have for Nifty is this trend line. यहाँ तक मैं बताता हूँ. This is possible. ये गया था तो शायद इसके ऊपर. So this is what I'm expecting Nifty to do. यहाँ तक ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लेवल ऑफ, क्योंकि अभी अर्निंग सीजन आएगा तो निफ्टी 18,300 तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, ओके, इन अप्रैल. और उसको लेके कौन जा सकते हैं? आई थिंक रिलायंस ऑफ द वर्ल्ड. रिलायंस इज स्टिल गुड. आज एक्सपायरी थी तो थोड़ा नीचे आया. अपना T1 T2 देखो, ये मेरा सेकंड टारगेट था, वो आ गया. और कुछ लोगों ने मेरे आई ओपनर किए थे अटेंड. देखो इस दिन में लोगों ने आई ओपनर अटेंड किया था 17 मार्च के बाद, जो 18 और 19 मार्च को मेरा आई ओपनर था. और उस आई ओपनर में मैंने ये पिक बोला था कि ये बाय हो सकता है, रिलायंस कैन बी अ बाय विद अ एग्जिट डोर ऑफ दिस. तो इसके नीचे जाता तो मेरा रिस्क था. देन एक टारगेट आ गया है T1 T2, सो दिस टारगेट वाज रिच्ड. ओके, ITC आई एम स्टिल लिटिल बुलिश ऑन दैट, आई एम नॉट बेरिश येट. ओके, लेट्स सी ITC if it crosses 64 odd, then we can see much higher levels. तो 64-65 का एक रेजिस्टेंस लगता है. हाँ, एक करेक्शन भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि जाएगा ही ऊपर. मैं एग्जिट मार चुका हूँ ITC से. इस महीने के लिए मैं लॉन्ग था एंड आई हैव एग्जिटेड एवरीथिंग फ्रॉम ITC एंड नाउ आई एम जस्ट वेटिंग. और क्या, देखो थोड़ा सा गड़बड़ क्या लगा आज, TCS वगैरह जो स्टॉक्स है ना हमारे, सो IT स्टॉक्स आर वेर लिटिल वीक. सो इन्फोसिस भी वैसे ही था, थोड़ा सा वीकनेस दिखाया था, but it's going sideways. So let's see what IT stocks do. If IT supports, then Nifty may also go up. So Infosys of the world, they have done a great recovery. So अगर Nifty को ऊपर जाना है तो IT has to support. All right. And metal index, ये थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है अभी. Okay. जैसे Tata Steels of the world, they went up and now some evening stars here. So Tata Steel. So अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन जो है हमारी, उसमें अगर कोई सुधार हो जाता है तो कमोडिटीज में फॉल अगेन. ओके, जैसे हिंडाल्को है, हिंडाल्को का अगर आप चार्ट देखो तो आज थोड़ा सा नीचे था. ओके, हिंडाल्को इज डाउन. सो इट वाज अ नो ब्रेनर. एज आई, हमारे मंदार ने भी इसमें पुट्स लिए थे आफ्टर यस्टरडे, सो ही गॉट आउट विद सम गुड डिसेंट प्रॉफिट्स. सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस सेक्टर इज लुकिंग लिटिल वीक. Whereas consumer sector, Tata Consumers of the world, they are looking little better. Again, I'm telling you that I don't have any positions whatsoever in these stocks. Equity में मेरे पास कुछ positions है, but F&O में I'm not having any position. But मुझे ऐसा लगता है कि Tata Consumers of the world, they can go up, and we may see 855s and all these levels. Initially एक यहाँ तक तो जाएगा ऐसा लगता है. Once you cross this level, we can have a level of about 850 odd. So I'm looking at Tata Consumer as a good bet. Okay, ये possible लगता है. Then Hind Unilever भी देखते हैं जरा. So this consumer, ये sector मुझे थोड़ा अच्छा लगता है अभी. Another one is Britannia. I have bought Britannia in cash market today. I'll show you. I have bought Britannia today, and this is not for you to take that buy. I bought 1,000 quantity at 3175. Okay, so I'm sitting on a little profit of 30,000 here. Okay,
7733. Okay, let's see. Britannia, Mari. So Britannia looks good, you know, a nice sort of a double bottom kind of a thing. And if it breaks this trend line, I think in this month, April month, before the earning season, we may see some higher levels. And if we break these levels, then I think we can see 3-3, so on. Yeah. But Tata Consumer is even better pick. Nestle's of the world. We can say Nestle India. So ये भी एक अच्छा long लगता है मुझे Nestle. Okay. So Nestle can be a buy, and Avenue Supermart. So D-Mart. Let's take a look at D-Mart. Now D-Mart is cut holding. So as long as it holds this level, I think D-Mart can be one to look at. So अगर market अगर ऊपर जाना है, market becomes little bullish, I think these are the stocks we can look for. There's no buying confirmation yet, but I think these are the stocks we can look for. Okay. So that's it, guys. I think मैं अभी कुछ अगर chat box में कोई सवाल आ रहे हैं मैं लेता हूँ. But all these stocks that I've discussed, this is my own study. Please don't copy anyone. Become an independent professional. You don't have to copy my trades or anybody else's trades. You learn on your own and don't think about, you know, ये ऑपरेटर कुछ करता है तो मेरा क्या होगा, ये फंड मैनेजर बोलते हैं सिर्फ पैसा डालो ऊपर जाता है. ऐसा नहीं होता है. कितना भी पैसा डालो, यस बैंक में डालो पैसा, जाएगा क्या देखो ऊपर. कुछ भी बोलते हैं. Questions are posted in the really chat. Manager I really doubt whether a fund manager will say like that. But ये देखो, ये अभी जिन्होंने क्या यहाँ पे क्या फंड मैनेजर ने पैसा नहीं डाला है, अटके हैं बेचारे, और बहुत सारे फंड मैनेजर निकल भी गए. सो फंड मैनेजर भी एक दूसरे के साथ लड़ते हैं. अरे मैं एक बात बताऊं, अगर भगवान भी उतर के आए ना यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करने के लिए, सारे भगवान, सारे गॉड्स ऑफ द वर्ल्ड, so there are going to be some gods who are going to make money and some gods are going to lose money. Okay, so even God can go wrong here. हाँ, yes, market God always right. God market. हाँ सर, प्रसाद क्या बोल रहे थे? I think chat box में कुछ सवाल है, मैं लेता हूँ. हाँ सर, मैसेजेस में डाला है. Yeah, sir, what to do if we had stop loss but that was not triggered? ऐसे नहीं होता है. अगर stop loss trigger होगा ही, problem is, you know, whether your trigger price is, let's say if you are buy and if तुमने नीचे का stop loss रखा था और सीधा gap down हो गया, तो trigger तो होगा. Problem is, you know, whether your order will get executed or not. Okay, so ऐसा नहीं होता. इसके लिए क्या करना होता है, तुमको थोड़ा लिमिट ऑर्डर भी डालोगे ना स्टॉप लॉस के लिए, तो यू पुट अ लिमिट ऑर्डर विच इज विद सम कुशन, हैव सम कुशन देयर, यू नो, दैट विल हेल्प यू. ऑलराइट. सो ऐसा नहीं होता कि स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा. स्टॉप लॉस तो ट्रिगर होगा विद गैप अप्स एंड गैप डाउन्स, बट योर ऑर्डर मे नॉट गेट एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन वेयर यू कीप द लिमिट ऑर्डर. आइडियली डोंट पुट मार्केट ऑर्डर्स, बिकॉज वो मार्केट ऑर्डर में कुछ भी अनाप शनाप तुमको रेट मिल जाएगा, स्पेशली इन ऑप्शंस, यू नो. सो डोंट पुट सच ऑर्डर्स देयर. ओके सर, 3 months में 1 लाख लॉस कर लिया, मैं बिगिनर हूं और ट्रेड में प्रॉफिट को सेव नहीं कर रख पाता. सुखवीर सिंह, सर 3 महीने में 1 लाख का लॉस कर लिया, बिगिनर हो तो पहले ठीक से सीखो यार. ओके सुखवीर, डू माय ओपनर एंड डू कम फॉर द सेशन. ओके सागर भौमिक, तो ऐसे 1 लाख कहने से अच्छा खुद सीखो ना यार, ऐसे मार्केट को दे दो. मार्केट इज अ वेरी एक्सपेंसिव टीचर. ओके सर, मैं स्टॉक मार्केट और देन फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट रूल्स प्रॉपर्ली. सर मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, फुल टाइम काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कैपिटल 1 लाख है, क्या मेरे लिए स्टॉक मार्केट एज अ फुल टाइम प्रोफेशन सही रहेगा? नहीं, 1 लाख से तुम फुल टाइम ट्रेडर बनने की कोशिश मत करो. पहले अपने आप को काबिल बनाओ, सीखो. वो 1 लाख में से 76 आवर यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. Do a ASTA course, geo program. After that, you continue to do your job. Yesterday, same question came to me. कि सर मैंने अभी जॉब गया है, मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ. ऐसा नहीं बनता है भाई. और 1 लाख करके तुम क्या 1 लाख पे क्या एवरी मंथ यू वांट टू अर्न 50,000, 1 लाख रुपीज, व्हाट? डोंट कीप सच एक्सपेक्टेशंस. ओके. एंड अगर तुमको प्रोफेशनल बनने के लिए तुमको टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा. मैं हमेशा कहता हूँ 1000 दिन देने पड़ेंगे टू बिकम अ प्रोफेशनल चैंपियन. सो ऐसे मत सोचो. ऐसा कोई तुमको बताएगा ना कि तुम ये 5-10 हजार का कोर्स कर लो, तुम फुल टाइम कर सकते हो, तो वो झूठ बोल रहा है. ओके, वो 5-10 हजार के कोर्स के लिए
तुम कोर्स तो कर लोगे, बोलेंगे हाँ चलो फुल टाइम, और बाद में वो खुद नहीं कमाते. ओके, तो इसलिए डोंट डू सच थिंग्स. बी मेंटली प्रिपेयर टू गिव 1000 days यार. Alright, so don't do it full time just on a 1 lakh capital. No, not possible. I don't know what you are earning every month. If you are earning what, if you are earning only 10-20,000, if you are not expecting much, 1 लाख पे 5-10 हजार कमा सकते हो आराम से कंसिस्टेंटली. उससे भी ज्यादा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, लेकिन जॉब करके करोगे तो अच्छा है. इनफैक्ट जॉब करके तुम और भी अच्छा करोगे, जॉब छोड़ के नहीं कर पाओगे. ओके, ये जो बोल रहा हूँ ना ध्यान में रखो. जॉब करके नहीं कर सकते तो जॉब कर छोड़ के बिल्कुल नहीं कर पाओगे. तो जॉब करके ही करो. कि तुम्हारा जो 1 लाख का कैपिटल है उसको प्रिजर्व करो, कोर्स करो, और बाद में स्टार्ट विद 25-30,000 वॉट एवर रिमेनिंग. कोर्स के बाद जो बचेगा ना वो 25,000 से शुरू करो, सिल्वर माइक्रो करो या $US करो, एंड देन जॉब करके करोगे तो चांसेस अच्छे हैं जल्दी करने के. अदरवाइज फुल टाइम करोगे तो बहुत सारा प्रेशर आएगा, तो माइंड के इश्यू ज्यादा आएगा. ठीक है, आई होप that addresses all the questions. It's 6:30. I hope you all enjoyed this session, and with some live examples of stocks and some live trading in crude and all. So I hope you all enjoyed. Please click on the like button if you liked it. Click on the like button. Yeah, click on the like button. And if you have not subscribed right now, click on the like button. Yeah. And if you have not subscribed to the channel, please do so and ask more and more people to join the channel. Our channel is not monetized. I'm not a YouTuber. Okay, I'm not a YouTuber here to earn on YouTube ka paisa. We don't want that. So our channel is not monetized. So please, if you think that this channel is giving some good content, our typically people give 10-15 minutes ke videos. Why? Because they know people don't, and they want more and more viewers. Okay, so we are not YouTuber. So our channels are like, this is like 1 hour video. If you think this is a good content, you promote this content to more and more people and ask them to join and subscribe the channel. Okay, and guys, if you really like, click on the like button. All right. So questions to be put in the comments. Yeah. And if you have any questions, please put the questions in the comment box in the same video. All right. So that we can take it in the next session. So yeah, we encourage you to put your questions and we'll definitely address that. And I really love the way this guy asked this question. It was quite a detailed one, but good. Lot of misconceptions out there about operators and about whether it can be a full-time, whether it is meant for me and all that. No, Raj, dear, don't worry. As I said, once you join ASTA, you will not have any such inhibitions and doubts. Okay. So thank you so much, guys. Love you all. And once again, just a reminder, we have an eye opener on 2nd, 3rd, and I'm having offline eye opener in Hayat. So if you really want to join offline eye opener, travel to Ahmedabad. Okay. Otherwise, there are online eye openers on 2nd and 3rd evening at 6 o'clock. This one is in the morning, 9 o'clock. Okay. Thank you so much. Bye, everybody. Thank you. God bless you all. Thank you so much. Bye.